श्रीमद्भागवतं पञ्चमस्कन्धः अध चतुर्विंशोऽध्यायः 10 श्लोकम् उद्यानानि चादितरा मन इन्द्रियानन्दिभिः कुसुम बलस्तभग शुभग किशलया वनत रुचिर विडभ विडबिनां लदाङ्गा लिङ्गितानां श्रीभिः समिधुन विविध विहङ्गम जलाशयनाम् अमलजलपूर्णानां जशकुलोल्लङ्घन शुभित नीरज कुमुद कुवलय कक्लार नीलोत्पल लोहित सदभद्रादिवनेषु कृतनिकेत नानामेकविकार कुलमधुर विविधस्वनादि विरीन्द्रयो स्वैर् अमरलोक श्रियमदीशयिदानि यत्र भावन भयमहोरादादिभिः कालविभागैरुपलक्ष्यते यत्र हि महाहि प्रवर शिरोमणय सर्वं तम प्रभादन्ते न वा येदेषु वसतां दिव् औषधे रसायना अन्नभानस्नानादिभिः विरादयो व्याधयो बलीबलीत जरादयश्च देहवैवर्ण्य दौर्गन्ध्य श्वेत क्लमक्ला निरिते वयोवस्थाश्च भवन्ति न केदेषां कल्याणानां प्रभवति कुतश्चन मृत्योर्विना भगवत्तेजश्चक्रापदेशात् यस्मिन् प्रविष्टे असुरवधूनां प्राय पुंसवनानि भयादेव स्रवन्ति वदन्ति च अदातले मयपुत्रो अशुरो बलो निवसति येन ह वा इह सृष्टा षण्णपतिर्माया काश्च नाद्याभिमाया विनोदादयन्ति यस्य च शृम्भमानस्य मुखतस्त्रय श्रीगणा उदपद्यन्त स्वैरण्य कामिन्य पुंश्चल्य इति या वै विलायनं प्रविष्टं पुरुषं रसेन काडकाग्येन साधयित्वा स्वविलास अवलोकनानुरागस्मित संलाभोभ पूकनादिभिः स्वैरं किल रमयन्ते यस्मिन् उभयुक्ते पुरुष ईश्वरोकं सिद्धोकमिद्ययुधमहागज बलमात्मानम् अभिमन्यमान गद्दते मदान्त इव तदोदस्ताद्विदले करो भगवान् काडकेश्वर स्वभाषत भूतगणावृत प्रजापते सर्गोप बृंहणाय भवो भवान्यासक मिथुनभूत आस्ते यद प्रवृद्धा शरित्व प्रवरा हाडकी नाम भवयोगो वीर्येण यत्र चित्र भानुः मादरिस्वना शमिद्यमान ओजसा बिभति तन्निष्ट्यूतं हाडकाग्यं सुवर्णं भूषणेन सुरेन्द्र अवरोधेषु पुरुषासक पुरुषिभिः धारयन्ते तदोतस्तात् शुतले उदरस्रावा पुण्यश्लोको विरोचनात् वजो बलिर्भगवता महेन्द्रस्य प्रियं चिकीर्षमाणेनादि देलब्धकायो भूत्वा वडुवामनरूपेण पराशिक्तलोकत्रयो भगवत् अनुकम्पयैव